A very warm good evening to all my dear students. This is Divya Chandwani and I welcome you all on Let's Crack 9th and 10th CBSE. So kids, my throat is not that good today, so please excuse me for that. I hope you all will understand. So I welcome you all on Let's Crack 9th and 10th CBSE. So if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe to it now. So, kids, this is my introduction. My name is Divya. I have done my BTech in electrical engineering. I have more than 2 years of teaching experience. I have mentored many students for NTSC and CBSE board exams, and I am a faculty in Kota, Rajasthan. तो बच्चों आज as you all know, today is day 5 of our revision series. आज है हमारा day 5 of our revision series of first flight, and today what we are going to do, today we are going to start a new chapter, that is from the diary of Annie Frank, which is the fourth chapter of your book First Flight. So I welcome you all in my class, and before starting this chapter, I would like to share some benefits with you all that you all can easily get. Okay, so first step, bachon, daily life classes. If you are fed up of recorded lectures, then you should go for an academy because you will get daily life classes. Second, you will get live tests and quizzes. Third, you will get structured courses. That means if you want to prepare for any Olympiad, any exam, you will get a structured course for it. Next is बच्चों unlimited access. That means you will have access to all the educators teaching on this platform. आपके पास multiple educators का access होगा. Okay. Plus what will happen? Plus you will get PDF notes. Okay. And plus fourth lecture of every educator is a dedicated doubt session. So all your doubts will be solved there. Okay. तो ये बच्चों हमारी प्लस पे बेहतरीन टीम है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपको इनसे पढ़ाई करनी है, इनसे पढ़ना है, इफ यू वांट टू मास्टर योर सब्जेक्ट, देन व्हाट यू हैव टू डू, just download the Unacademy learning app, choose the goal that is CBSE class 10 and click on the get subscription button. It's that easy. ये बच्चों हमारा ऑफिशियल चैनल है लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE का. यू हैव टू जॉइन दिस. आपको क्या करना है? Download the Telegram app, type the link in URL and click on join. If you don't want to do this, what you can do is just search Quest 10 CBSE Telegram पे, and you can join this awesome channel and you will get all the information about CBSE class 9th and 10th on this channel. So now kids, this is our awesome subscription plan. So kindly go through it. As I have already told you कि आप अगर सिर्फ 10th का सब्सक्रिप्शन भी परचेज करते हैं तो भी आप 6th 7th and 8th बाकी कोर्सेज भी एक्सेस कर पाएंगे. सो यस, इफ योर siblings are in 6th 7th or 8th, तो भी आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा. 10th का ले लो, 6th का ले लो. You just have to purchase one subscription and all your worries will be gone, because one subscription and you can access all the courses from class 6 to class 12. CBSE class 6 to CBSE class 12 के आप सभी courses को access कर पाएंगे. So for example, if you are in 10th and your brother or sister are in 6th 7th and 8th, so kindly go for one subscription and आपका पैसे एक बार देने काम दोनों का हो जाएगा. So now if you want to go for 12 months, okay, you don't even have to pay 15,000 rupees. Just apply this awesome referral code, that is Divya10, and you will get an instant discount of 10%. So 15,000 की जगह you have to pay 13,500 rupees, and 24 months का जो है 25,000 का, in that case you only have to pay 22,500 rupees, and जो 36 months का है you don't even have to pay 32,000 rupees, you just have to pay 28,800 rupees. All this magic will happen when you will apply this awesome referral code Divya10. You will get an instant discount of 10%. Okay, so now without any further delay,
let's start our chapter, that is from the diary of Annie Frank. So let's go. So now, kids, quickly let me know in the live chat. Have you read this chapter? Um, um, have you read this chapter? Haven't? If you have if you have read this chapter or not, please let me know in the live chat. I'm really sorry. I don't know why I was fumbling today. So yeah. So जिन्होंने पढ़ लिया है आप रिवाइज कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है it's going to be very interesting for you because this chapter is written by Annie Frank only. This is an autobiography. Okay, it's written by Annie Frank only. तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग एनी फ्रैंक के बारे में ही जानने वाले हैं. So therefore I haven't mentioned anything about the author. Okay. So this beautiful girl, this beautiful lady is Annie Frank. Okay, chalo. So let's start now. Now, who is Annie Frank? The first question that comes in your mind is, मैं आपको पहले ही बता दूं, from the Diary of Annie Frank एक बहुत ही famous novel है आज के time पे भी. Okay, so it's obviously written by Annie Frank. So now, who is Annie Frank? Who was Annie Frank? Okay, so Annie Frank was a 13-year-old girl. Okay, so the author feels, now who is the author? The author is Annie Frank, and she feels that it is strange and unusual for her to write a diary because it is the first time she is doing it. Right. So for the very first time, she, decided that she is going to write in her diary, which she considered to be her best friend in loneliness. What she thinks that people are not your best friends. Persons are not your best friends. Your best friend can be your diary because you can mention each and everything in your diary and you won't be judged because after all non-living things are good in absorbing things and human beings are really good in scattering the gossip here and there. So what she used to think that for the very first time I'm going to write a diary. She feels that in the future no one will read about a young girl's past experiences. और वो क्या सोचती है, अगर मैं डायरी लिख भी लूंगी या लिख भी दूंगी बट तभी भी फ्यूचर में कोई मेरी पास्ट एक्सपीरियंसेस को पढ़ना नहीं चाहेगा because after all I am just a 13-year-old girl and why anyone would like to um, read my experience. So she used to have such thoughts in her mind. So now she had all these thoughts in her mind. Okay, but then she put these thoughts away and decides to write her thoughts. The author is feeling very lonely as she has no friends to talk to. She wants to give her need of friend a shape, hence decides to name the diary as Kitty. So first of all, I would like to know in the live chat that who gifted her that diary. Quickly let me know in the live chat. Was it a gifted one or was she purchased it? So quickly let me know in the live chat. Okay. तो बच्चों उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? She named her diary as Kitty. She wants to give her need of a friend a shape. And उसे क्या लगता था? She always used to feel lonely because she never had friends to talk to. Obviously she had friends, but she didn't have any true friend. So that's why she decided to write diary on a daily basis, and she named her diary as Kitty. So this name can be asked in exams. So kindly remember this. Okay. Now writer. Who is the writer? The writer is Annie Frank only, and Annie Frank feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people who have low patience level. So as you can see in this picture,
A girl is sharing all her thoughts with the diary, and what she has mentioned that paper has more capacity, कागज के टुकड़े में ज्यादा ताकत है हमारे थॉट्स को एब्जॉर्ब करने की एज कंपेयर टू लोगों से, क्योंकि लोगों को अगर आप कुछ बताओगे, obviously nowadays human being, or earlier also human beings had low patience level, but paper has enough patience that whatever you want to write, whatever you want to mention, you can mention easily, and paper is not going to judge you. Paper is not going to gossip about you with other human beings, but human beings do such things. अगर आज आप आपको कोई किसी को चीज बताओगे, so it is not necessary that he or she will not share your personal thoughts, your personal things with others, right? So therefore what Annie feels that, so it's good to write on paper. It's good to share it with your diary. So that's why she named her diary as Kitty, because she was aware about it, that paper has more capacity and it can absorb our thoughts, um, um, it can absorb our thoughts better as compared to human beings. So now let's see what happened next. She has a good time with friends but cannot share everything with them as they are not true friends. So as I have already told you, ऐसा नहीं था बच्चों के एनी फ्रैंक के दोस्त नहीं थे. Obviously Annie Frank had friends, but she did not have any true friend जिस पे वो एकदम blindly trust कर सके and जिसके साथ वो कुछ भी share कर सके. So now who was the most lovable person according to Annie Frank? Quickly let me know in the live chat if you know about it. So if you don't know about it, I'm there to help you all. Okay. So now, yeah. So Annie Frank refers to her father as the most lovable person who presents her the diary on her 13th birthday. वो अपने father से वैसे ही बहुत प्यार करती थी, and then Annie feels that her father is the most adorable person because she loves him a lot, and then he finally gives her the most adorable gift, that was her diary. So that I've already asked you. So it was the diary which she named as Kitty, and she used to write each and every thing in that diary because she did not have any true friend. So according to Annie Frank, her father was the most adorable person. Okay, clear? Chalo. Let's see what happened next. So yeah, she refers her father as the most lovable father one could get. और एनी फ्रैंक को ऐसा लगता था कि किसी भी इंसान को इतने लवेबल फादर नहीं मिल सकते जितने उनको मिले थे. ठीक है. He, okay, that's incorrect. Her father married her mother when he was at the age of 36. उन लोग की शादी कब हुई थी एनी फ्रैंक के पेरेंट्स की? तब उसके फादर की एज क्या थी? एनी फ्रैंक्स फादर वाज 36 at that time. Annie Frank's father was 36 at that time, and her mother was only 25 at that time. Okay, they had this huge gap between them. So now what happened, guys? उनकी एक बड़ी बहन भी थी. एनी फ्रैंक की एक बड़ी बहन भी थी. उनका नाम क्या था? Her sister's name was Margot, and they both were born in Frankfurt. Where they both were born? They both were born in Frankfurt. And Frankfurt में क्या होता था? ये लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? एनी फ्रैंक की फैमिली वाले लोग, they used to follow Judaism. ओके, इन्हें हम बोलते हैं जूइश पीपल. शायद आपने एसएसटी में पढ़ा भी हो हिस्ट्री में. नाजिज्म का बहुत ज्यादा रोल है इस चैप्टर में. हो सकता है आपने हिस्ट्री ऑफ नाजिज्म में पढ़ा हो ये. तो yeah, that's something I wanted to tell you. So now, as soon as Annie turned 4, her father moved to Holland, followed by her mother in September. So where his father went? His father went to Holland. Holland is, you all know that it's a country in Europe. So उसकी जो उनकी जो मदर थी वो भी सितंबर में हॉलैंड चली गई. लेकिन जो दोनों बहनें थी एनी फ्रैंक और मार्गट, वो दोनों कहाँ पे रही? They both stayed with their grandmother in Aachen only.
वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रुकी थी और एज अ रेफ्यूजी जो है उनके फादर हॉलैंड चले गए थे. ओके. So now Margot was also sent to Holland in December. पहले उसके फादर गए, ओके, फिर सितंबर में उसकी मदर गई, इन दिसंबर में उसकी जो बड़ी बहन थी मार्गोट वो भी चली गई. ओके. और मार्गोट को बर्थडे प्रेजेंट क्या दिया गया था? उनका बर्थडे प्रेजेंट था बच्चों एनी फ्रैंक वेंट टू हॉलैंड इन February. और एनी फ्रैंक अपनी सिस्टर के लिए क्या थी? Was like a birthday present. Okay. So first her father went to Holland, then her mother went to Holland, then her sister went to Holland, and then at last she also moved to Holland. Okay. So is this para clear to everyone? That when they got married, when her parents got married, when her father was 36 and when her mother was only 25, and then as they used to follow Judaism, they had to migrate to Holland, which is a country in Europe. Okay. So now in Holland, Annie was sent to Montessori Nursery School. ठीक है. So it was her first school. Annie जब एक छोटी बच्ची थी तो उन्हें कहाँ भेजा गया था? She was sent to Montessori School. Montessori School में भी उसका बहुत प्यार हो गया था. प्यार एज इन अपनी प्रिंसिपल से, अपनी हेड मिस्ट्रेस से बहुत कनेक्शन हो गया था. So now what are Montessori nursery schools? So if you are aware about it कि ये कौन से स्कूल होते हैं, so quickly let me know in the live chat कि ये कौन से स्कूल होते हैं. मैं आपको बताती हूँ बच्चों, Montessori nursery schools basically यहाँ पे क्या होता है? They follow a system of education that seeks to develop natural interest. जिस भी बच्चे का जिस चीज में दिलचस्पी है या जो उसका नेचुरल इंटरेस्ट है वहां पे वो लोग ज्यादा फोकस करेंगे. ओके. By the way, this is my lukewarm water, as you all know. So because of my throat, I'm consuming it for last few days. So that's the case. Chalo. So yes, kids. Now in Holland, Annie was sent to this school. Okay. When she was sent to that school, ये भी पूछा जा सकता है. So when she was only 6 at that time, she was sent to this Montessori nursery school. It was her first school, and she started from first form. Okay. And she had Mrs. Cupris, the headmistress, as a teacher in sixth form, who even cried at the time of farewell. अब बच्चों जब उनको ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा था, शी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6. आई एम सॉरी, माय मिस्टेक. वो वहां पर कब तक रुकी थी बच्चों? वो वहां पे तब तक रुकी थी, वो गई नहीं थी जब शी वाज 6. वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में रुकी थी जब तक कि वो 6 years की हुई तब तक. और जब उनका फेयरवेल वाला दिन था, जब शी हैड टू डिपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल, so at the time of departure, at her farewell, she and her headmistress Mrs. Cupris had tears in her eyes. Okay, तो एनी फ्रैंक का अपनी हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रिस से इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था that Mrs. Cupris cried because Annie Frank was leaving the school. Okay. Okay, so now let's discuss Annie Frank's bond with her grandmother. So let's check out that how was her bond with her grandmother. Okay. So now, kids, what happened? It was in the it's in the summer of 1941. It was Annie Frank's birthday, and it could not be celebrated well because her grandmother fell ill, and she was supposed to go through. She was supposed to undergo an operation. So therefore, her birthday, Annie Frank's birthday, couldn't be celebrated in a good way. Okay, but yes, guys, for your kind information, Annie Frank अपनी दादी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, and she was really, really, really fond of her grandmother. Okay. अब उनका ऑपरेशन होने वाला था, बट उनका ऑपरेशन हो नहीं पाया because unfortunately she died in January 1942, and Annie misses her grandmother more than anyone knows. और वो अपनी दादी को इतना ज्यादा मिस करती थी, इतना ज्यादा मिस करती थी कि शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है उस चीज का.
This year's birthday was to be celebrated with great zeal so as to compensate for last year, कि लास्ट ईयर एनी फ्रैंक का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया था, तो इस बार बिल्कुल एंथुजियाज्म से एनी फ्रैंक का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट होना था, बिकॉज फैमिली वांटेड टू कॉम्पनसेट फॉर द लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर उसका बर्थडे अच्छे से नहीं मना पाए थे। पर ऐसा होता है ना हमारे घर पे भी, यू नो लास्ट ईयर वी कुडंट मेक इट, सो दिस ईयर वील सेलिब्रेट इट ऑन अ लार्ज स्केल। मैं तो यार यही दुआ करती हूँ सच में यार, इस साल हम सबने अपने बर्थडे लॉकडाउन में मनाए हैं 2020 में, एंड आई होप एंड प्रे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं 2021 में सबके बर्थडे बहुत ही फैंटास्टिक हो और सबकी फैमिली की हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे। सो लेट्स होप एंड प्रे कि यार ये कोरोना जल्दी चला जाए। सो नेक्स्ट ईयर 2021 वुड बी अ फैंटास्टिक ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, तो वैसा ही हुआ बच्चों, उसकी जो फैमिली थी उन्होंने क्या डिसाइड करा कि दिस ईयर वी आर गोइंग टू मेक इट ऑन अ बिग स्केल, हम बहुत शानदार बर्थडे बनाने वाले हैं। She then mentions that her family is doing well, which sums up her background and brings her to the present date of June 20. So now I would like to tell you one more thing. जब उनकी grandmother की death हुई थी तब एनी एक ऐसे शॉक में चली गई थी, उन्होंने कुछ टाइम के लिए कुछ अपने यू नो कुछ ऐसा पीरियड आया उनकी जिंदगी में, at that time she stopped writing because she was in a complete shock because of her grandmother, and she loved her grandmother a lot, so that's why she stopped her diary writing which she used to do on a daily basis. फिर उन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया और उसके बाद अगेन शी स्टार्टेड राइटिंग, बट आफ्टर दैट शी रोट अगेन एज शी थॉट ऑफ हर ग्रैंडमदर्स लव एंड अफेक्शन। पहले तो उन्होंने बहुत टाइम तक नहीं लिखा बिकॉज शी ऑब्वियसली शी यूज्ड टू मिस हर ग्रैंडमदर, लेकिन फिर अपने ग्रैंडमदर की लव एंड अफेक्शन की वजह से कुछ टाइम का ब्रेक लेने के बाद अगेन शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी। Okay, so now obviously it was 1942 when she is again writing her diary. अब वापस से वो समय आ चुका था जब वो अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर रही थी। ओके, so now it was June 20, 1942. तो ये तो बच्चों उनकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ हो गई, उनके फैमिली के बारे में हमने बात कर ली। बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब जो कहानी है वो बिल्कुल ही एक फनी ट्विस्ट लेने वाली, एक फनी मोड़ लेने वाली है, जहां हम उनकी फैमिली, फादर, मदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमने कर ली। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट हर स्कूल लाइफ, you know what kind of a friends she had, what kind of educators and teachers she had in school, that we are going to discuss in the second part of this chapter. Okay, so now it was the present day. So it was June 20, 1942. She mentions how her class is nervous about their results. The author says that the only subject she is unsure about is mathematics. So आज अब क्या है, उसे उन्होंने अपनी दादी के बाद बहुत टाइम का ब्रेक ले लिया, but now it was June 20, 1942. She mentions how her class is nervous. उनकी जो पूरी क्लास थी एनी फ्रैंक की वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि अब उनका रिजल्ट आने वाला था, एंड यू नो दे पीपल वर नॉट श्योर, सॉरी, सो यस दे पीपल वर नॉट श्योर कि यार हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे, वेदर वी विल बी एबल टू क्वालिफाई दीज एग्जाम्स और नॉट, और हम अगली क्लास में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सो दे ऑल वर क्वाइट कंफ्यूज, और वो लोग आपस में जो उसके फ्रेंड्स या क्लासमेट्स थे वो लोग बेट लगाते रहते थे कि यू नो हम लोग अगली क्लास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सो दे यूज्ड टू डू सच सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशंस। ओके, अब जो एनी फ्रैंक थी उनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में डर लगता था, बाकी सभी सब्जेक्ट में वो बाकी सभी सब्जेक्ट्स में शी वाज quite good. So she was only afraid, she was only unsure about mathematics. So she and her friend G are trying to stop the students from making noise. सभी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं क्लास में, and you know both these girls, Annie Frank and G, they both were trying to stop the students from making noise, but to no avail. लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ. Both the girls could not stop their classmates, and they all were discussing कि हम लोग पास होंगे नहीं होंगे, and they all were busy in making noise. Okay, so but to no avail का मतलब but it did not benefit them.
they were not able to stop the classmates. Okay, but it was of no help. Okay, but it was of no help. Okay, so according to the author, about the quarter of the class should not pass as they do not participate in any activities. अब एनी फ्रैंक क्या बोलती है, मैं तो वैसे भी यही सोचती हूँ कि मेरे क्लासमेट्स को पास नहीं होना चाहिए, और वो उन्हें क्या रेफर करती है, एनी फ्रैंक अपने क्लासमेट्स को बोलती है कि ये तो डमीज है. Annie Frank क्या बोलती है? Thinks she even thinks that her classmates are dummies because they do not perform in any activities and basically they do not participate in any activities. तो वो क्या बोल रही है कि मुझे वो कैसे लगते हैं, डमीज की तरह लगते हैं, एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि यार वो पार्टिसिपेट तो करते नहीं है, तो उन्हें पास होना भी नहीं चाहिए. So according to Annie Frank, about quarter of the class, that means I guess about one fourth of the class should not pass as they do not participate in any of the activities. So now those who have read the chapter, quickly let me know क्या जो उसके मैथ्स के प्रोफेसर थे वो एनी फ्रैंक को पसंद करते थे या नहीं पसंद करते थे. Quickly let me know in the live chat. Okay, so now Annie Frank recalls how the maths professor is constantly irritated by her talkativeness. अब बाकी जितने भी teachers थे, Annie had a quite good relation with all other teachers except Mr. Keesing. Now, kids, who was Mr. Keesing? If you are aware about it, please let me know. मिस्टर कीसिंग कौन थे बच्चों? मिस्टर कीसिंग वाज एनी फ्रैंक्स मैथमेटिक्स टीचर. और मिस्टर कीसिंग जो थे, ही यूज्ड टू हेट एनी, या फिर आप बोल सकते हो कि वो पसंद नहीं करते थे एनी फ्रैंक को, बिकॉज एनी फ्रैंक यूज्ड टू टॉक अ लॉट इन हिज क्लास. ओके, तो वो क्यों पसंद नहीं करते थे? अगर बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाए तो. So Mr. Keesing did not like Annie Frank because of her talkative behavior, and she always used to talk in his classes. So therefore, Mr. Keesing uh, never liked her. Okay. So now, while talking in his classes, he gives her extra homework as punishment. अब मिस्टर कीसिंग क्या पनिशमेंट देते थे बच्चों एनी फ्रैंक को? कभी कभी वो उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे जिससे कि वो अगली क्लास में ज्यादा बातचीत ना करे, बट वो एक्स्ट्रा होमवर्क का भी कोई असर नहीं होता था. अगेन शी यूज टू टॉक इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, तो अब फर्स्ट पनिशमेंट जो मिला था वो क्या मिला था एनी फ्रैंक को? द फर्स्ट पनिशमेंट इज टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स. ये सारी जो पनिशमेंट्स है आपको याद रखनी है ताकि अगर बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो. सो फर्स्ट पनिशमेंट दैट वाज गिवन टू एनी फ्रैंक वाज दैट शी वाज सपोज्ड टू राइट एन essay on Chatterbox. What she was supposed to do? She was supposed to write an essay on Chatterbox. Okay. which the author thinks as weird. अब एनी फ्रैंक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यार ये मिस्टर कीसिंग मुझे क्या क्या पनिशमेंट देते हैं, बट वो घर पर आई एंड देन शी इमेजिन्स अबाउट द टॉपिक एंड डिसाइड्स टू प्रेजेंट कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग. ऐसा नहीं कि वो ऐसे नहीं लिख कर गई या उन्होंने सॉरी मांगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ. उन्होंने अपने बिल्कुल पुख्ता सबूत, पुख्ता जो आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स थे वो सब कुछ उस ऐसे में मेंशन करें. She writes that she will try to better herself but cannot eliminate talking completely. वो क्या बोलती है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करूंगी but I cannot stop talking completely. The professor finds it amusing but a lot but then he allots another topic which she did not change because she did not change her nature. फर्स्ट टाइम उसको पनिशमेंट मिला कि आप चैटर बॉक्स के ऊपर ही लिख कर आओ. उन्होंने क्यों दिया था वो पनिशमेंट कि जिससे लिखने से she will be ashamed, she will feel bad and then she will stop talking in the class. लेकिन वो अपने बिल्कुल strong concrete argument के points लिखकर आई थी उस ऐसे के अंदर. ठीक है, and she did not change her nature also. She was always busy in talking in Mr. Keesing's class. Okay, so now it was time for the second punishment. अब उन्हें second punishment मिल रहा था. Now again she was supposed to write an essay, but now the topic was bit different. What was the topic, guys? It was an incorrigible chatterbox. So now those who have read the chapter,
Please quickly let me know the meaning of incorrigible. What is an incorrigible chatterbox? Okay. तो बच्चों incorrigible का मतलब होता है person, one who cannot be changed. Okay, so not able to be changed. So now the topic was an incorrigible chatterbox because she was always a chatterbox. So therefore, her second topic was an incorrigible chatterbox because she couldn't change herself. तो उन्होंने second time क्या दिया कि तुम एक incorrigible chatterbox के ऊपर ऐसे लिख कर आओगी, which refers to habit that is difficult to change, as I've explained to you. Okay. So now, kids, what she wrote in that, I will explain you that. अच्छा बच्चों, अगर फर्स्ट आपसे कोई पूछे कि चैटर बॉक्स में वो क्या क्या लिख कर जाती है ऐसे में, तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड्स आल्सो. So she gave her concrete arguments when she was supposed to write an essay on Chatterbox. और उसने अपने क्या क्या रीजंस दिए थे कि why I am so talkative. उन्होंने 3 पेज का पूरा जो है essay लिखा था. She wrote an essay of about 3 pages. Okay. तो पहला वो क्या बोलती है कि ये एक स्टूडेंट का फीचर है. इट इज अ फीचर ऑफ अ स्टूडेंट एंड हमें बिल्कुल भी रोका नहीं जाना चाहिए. ये हमारा फीचर है, हम लोग बात तो करेंगे ही करेंगे. देन सेकेंड रीजन व्हाट शी गेव दिस रीजन दैट शी हैज इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर. उसकी मदर भी बहुत ज्यादा बात करती है, बहुत बातूनी है. तो शी हैज इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, क्योंकि उसकी मदर भी बहुत बात करती है. And now as she has inherited from her mother, she could not stop herself from talking. So she has inherited this trait from her mother. Okay. और उसकी मदर भी बहुत ज्यादा बात करती है, तो इस वजह से वो भी बहुत ज्यादा बात करती है. सो शी गेव टू these 2 points. She wrote these 2 points when she was supposed to write an essay on chatterbox. So this was her first punishment क्योंकि वो नहीं सुधरी थी, अभी भी बहुत बात करती थी मिस्टर कीसिंग की क्लास में. Now what she was supposed to do, second time she was supposed to write an essay on an incorrigible chatterbox, जो इंसान अपने आप को बदल नहीं सकता है. ठीक है. ठीक है. तो अब उनका टॉपिक क्या था? आफ्टर कीपिंग एन आई ऑन हर द प्रोफेसर गिव्स हर अनदर टॉपिक, क्वैक 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 क्वैक. ठीक है. क्योंकि अब वो नहीं सुधर रही थी तो सेकंड टाइम उनको पनिशमेंट मिला था दैट शी वाज सपोज्ड टू राइट डाउन एन एसे ऑन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स. फिर उनको थर्ड टाइम क्या बोला? तुम लिख कर आओ क्वैक 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 के ऊपर. ओके. So this was her third punishment. She runs out of thought after writing 2 times on a similar topic. A third time when she was supposed to write down on quack 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 quack, she was loss of words क्योंकि वो already 2 बार same topic के ऊपर ऐसे लिख चुकी थी. First time she wrote it for about almost 3 pages. So now kids, she was short of words. उनके पास शब्द कम पड़ रहे थे तीसरी बार ऐसे लिखने के लिए. But Annie Frank being Annie, so now she wrote something interesting and she wrote something completely different this time. Okay. Now she decides to write her third topic in the form of a verse. Okay. उन्होंने क्या डिसाइड करा कि मैं अपनी फ्रेंड की मदद लूंगी. उनकी फ्रेंड का नाम क्या था जिससे उसने मदद ली थी? She took help from her friend Sane. उनकी जो फ्रेंड थी Sane, she was really good at poetry. उनकी जो फ्रेंड थी बच्चों सेन, शी वॉज रियली गुड एट पोएट्री. तो उन्होंने क्या डिसाइड करा कि आई एम गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड सेन हु वॉज रियली गुड एट पोएट्री. So she decided to write her third essay in the form of a verse. Now what is verse? She planned that she will write her essay in the form of a verse. उसने क्या डिसाइड करा कि मैं अब एक पोएम की फॉर्म में अपना ऐसे लिखकर जाऊंगी. Because now she was really लॉस ऑफ वर्ड्स क्योंकि वो 2 बार पहले ही लिख चुकी थी. ओके. नाउ व्हाट शी डिड, शी राइट्स अ सटायर. वो सटायर लिखती है किसके ऊपर? अपने टीचर के ऊपर. एंड उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी एनी फ्रैंक की कि जो उनके टीचर थे मिस्टर कीसिंग, उन्होंने किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लिया. ही टुक इट इन अ वेरी
light way. So now what she wrote that I will tell you. तो वो क्या है, ह्यूमर यूज करने के लिए सरकास्टिक तरीके से उन्होंने अपने टीचर के ऊपर कमेंट किया था. सो नाउ व्हाट शी रोट इन द थर्ड एसे, सो दैट आई विल टेल यू. उन्होंने क्या लिखा बच्चों, एनी फ्रैंक ने अपने थर्ड एसे में लिखा, जो उन्होंने पोएम की फॉर्म में लिखा था. शी रोट दैट इट वाज अबाउट थ्री डकलिंग्स. ओके, इट वाज अबाउट थ्री डकलिंग्स who are going to be dead now because their father duck bit them as they quacked too much. ये उसकी हाइलाइट्स हैं पोएम की जो उन्होंने लिखी थी. ठीक है, उन्होंने क्या लिखा कि तीन डकलिंग्स थी, वो उन्होंने खुद को और खुद की फ्रेंड्स को क्या बताया था, डकलिंग्स. ठीक है, डकलिंग्स कौन होती है, डक के जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं. फादर किसको बताया था, मिस्टर कीसिंग को. उन्होंने क्या बोला, ही कंपेयर्ड मिस्टर कीसिंग एज द मेन डक, द फादर डक. और उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनके बच्चे, उनकी जो डकलिंग्स थी वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करती थी. द थ्री डकलिंग्स यूज्ड टू क्वैक अ लॉट, so therefore the father duckling bit them as they quacked too much. उन्होंने क्या बोला कि एनी फ्रैंक और उनकी जो फ्रेंड्स थी, उन्होंने उसको किससे, अपने आप को कंपेयर किससे करा. She compared herself and her friends to what? To ducklings. And उन्होंने फादर डकलिंग किसको, फादर डक किसको बताया था, मिस्टर कीसिंग को, कि हम लोग क्लास में इतना शोर करते थे that Mr. Keesing bit, Mr. Keesing, that was the father duck, he bit the three ducklings, and all the ducklings um, were dead because they quacked too much. तो उनको, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने इतना मारा that all of them were dead. So obviously it was not true, as you all can see कि एनी फ्रैंक का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना खतरनाक है. एंड किस तरीके से उन्होंने पोएम लिखी थी अपने टीचर के ऊपर, यू ऑल कैन सी दैट. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको किड्स? The professor recites the entire poem in front of the class, and the author talked uninterruptedly after this. अब इस टाइम के बाद जो मिस्टर कीसिंग है, उन्होंने ये क्लास के सामने पोएम पढ़ी, एंड मिस्टर कीसिंग को समझ में आ चुका था. मिस्टर कीसिंग ने उसको बिल्कुल जोक के तरीके से लिया. ही टुक इट इन द राइट वे. उन्होंने वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि नाराज हो गए, या ही टुक इट इन अ रॉन्ग वे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. ही टुक इट इन द राइट वे. And from that day he never bothered any for talking. After that incident he never bothered any from talking, and she was never even given extra homework after that. और उसके बाद से एनी फ्रैंक मिस्टर कीसिंग की क्लास में हमेशा अनइंटरप्टेडली, दैट मीन्स बिना किसी रुकावट की बात करती रहती थी. एंड 3 बार उनको मेजर पनिशमेंट्स मिली थी. व्हाट वर द पनिशमेंट्स? So first was she was supposed to write down an essay on being a chatterbox. Second time she was supposed to write an essay on an incorrigible chatterbox. Third time she was supposed to write down an essay on quack 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 quack. Okay. So I hope this chapter is clear to all my lovely kids. Thank you so much, kids. थैंक यू सो मच किड्स. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, सो प्लीज लाइक द वीडियो क्विकली. जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फोन से, अपने भाई बहन के फोन से, अपने पापा मम्मी के फोन से, सबके फोन से. एंड प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो. So please like the video, and if you haven't subscribed to our channel, subscribe to it now. That's Let's Crack 9th and 10th CBSE. फटाफट से बच्चों हमारे बेहतरीन चैनल को सब्सक्राइब कर लो. Do not forget to hit the bell icon, so whenever a video is premiered, you will get the notifications. You will get the notifications. And one more important thing, guys, if you are not following me on Unacademy app, and if you want to attend my special classes, and if you want to attend my fantastic quizzes on Unacademy Learning app, then what you have to do is just download the Unacademy Learning app, search my name, that is Divya Chandwani, and please start following me there, so you will get notification about my special classes. And usually मेरी special class daily जो होती है वो होती है 9:30 p.m. पे. So do join me for some wonderful quizzes at 9:30 p.m. and YouTube पे हम लोग daily मिलेंगे at 5:30.
p.m. Okay. Thank you so much, kids. Thank you so much. Please stay home, stay safe, and keep showering your love on me. Do not forget to like this video. And the last and the most important thing is, do not forget to use this awesome referral code, that is Divya10, to get an instant discount of 10%. जब भी आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं, जब भी नहीं, आपको अभी ही परचेज करना है, आज ही. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आपके बोर्ड्स की डेट्स भी आ चुकी हैं. So please do not waste your time and subscribe to an academy now, and do use my code Divya10 to enjoy all these benefits and to get an instant discount of 10%. Bye bye all. See you all. See you all in my special class. Bye kids. Bye bye. Take care.